Now comes to the next physiographic feature of India, that is Thar Desert. Now, first we have to know what is desert. Now, desert where little precipitation occurs, जहाँ पर बहुत कम precipitation होता है, पानी बारिश होती है, ऐसे रीजन को हम desert कहते हैं. And in our country we have three desert. Like the first one, this is Ladakh desert, and this is also called the cold desert of India. Then this portion is Thar desert, and this is also a hot desert of India. And here is in the north of Gujarat, this is a Kutch desert, which is also called a white salt desert. But here we are going to discuss about the great desert of our country, that is a Thar desert. Now this Thar desert lies towards the western margin of the Aravalli range. Now here is Aravalli range, this is Aravalli range, and so it is situated in the western margin of Aravalli range, and it also forms a natural boundary between India and Pakistan. ये पूरा एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये नेचुरल बाउंड्री को भी ये डेजर्ट फॉर्म करता है. And the Indian desert is an important physiographic division of India. This is also called Thar desert and occupies the western part of India. ये west side में है पूरा ये, and it lies mostly in the states of Rajasthan, Punjab, Haryana and some portions of our Gujarat. इन पूरे स्टेट्स के कुछ हिस्सों में ये डेजर्ट फैला हुआ है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सैंडी प्लेन्स with many types of sand dunes. Now what is sand dunes? Sand dunes look like in this way, and this is formed due to deposition of sands because this region is totally arid region. ये arid region है जिससे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से बालू एक जगह से दूसरे जगह पे कलेक्ट होता है, तो ये एक ड्यून को फॉर्म करता है जिसे हम बालू का टिब्बा बोलते हैं. And this portion receives a very less rainfall, that is on less than 25 centimeter, and there are few rivers appear mainly during a monsoon season. Monsoon season में कुछ नदियाँ यहाँ पर निकलती हैं, but after the end of monsoon the rivers disappear into the sand. मानसून जैसे ही ख़त्म होता है वो इन्हीं बालुओं में चली जाती हैं. एंड द क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया इज़ टोटली एरिड विद वेरी लिटिल वेजिटेशन. पानी कम है यहाँ पर, जिसकी वजह से वेजिटेशन भी यहाँ पर बहुत कम होते हैं, जस्ट एज अ फॉर्म ऑफ थॉर्नी बुशेस और कैक्टस लाइक प्लांट्स. एंड लूनी इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ दिस थार डेजर्ट. लूनी जो है यहाँ की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है. एंड क्रीसेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस थार डेजर्ट इज अ क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स विच कॉल्ड अ बार्चन्स आर प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस थार डेजर्ट एंड विच वी सीन नियर द इंडो पाक बाउंड्री, जो हमें ये इस इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री में पर देखने को मिलता है. And May and June are the hottest months of the year with the 50 degrees Celsius temperature. And this Thar desert is the 17th largest desert in world, and it is also the world's 9th largest subtropical desert. एंड जैसे कि हमने बार्चन्स के बारे में बात किया, तो जैसलमेर में अगर देखें तो जैसलमेर इज़ वेरी रिच इन बार्चन. नाउ कम्स टू द लास्ट फीचर ऑफ द फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया, दैट इज़ आइलैंड्स. सो इंडिया हैज़ 2 islands. One is Andaman Nicobar and the another is Lakshadweep. So here I am going to explain the important features of Andaman and Nicobar. Now, as you all know that Andaman Nicobar is a union territory of India which located
in the Bay of Bengal. And the arc constitutes, in this way, the arc constitutes the boundary between the Bay of Bengal to the west and the Andaman Sea to the east. And these islands are a group of 572 islands. Out of 572, 37 are inhabited. And this island comprises two island groups. The first one is Andaman in north and Nicobar in south. And this Andaman divided into three districts. This is Northern Andaman, Middle Andaman, and here Lower or Southern Andaman. And collectively these North, Middle and Lower Andaman known as Andaman. And in south, here is Little Andaman, which separated by or from the Nicobar Islands. And Port Blair is here, and this is, Port Blair is the capital of this one. The Port Blair is the capital of Andaman and Nicobar. And here we have to see the Nicobar. This one is Nicobar Island, which consists of your 19 islands, and famous island is Car Nicobar and Great Nicobar in the south, which is very close to Sumatra and Indonesia. And the southernmost tip of these islands is your Indra Point, and this Indra Point, half of the Indra Point now submerged in water in 2004 by a large tsunami. And we have to also see the climate of this Andaman Nicobar is more tropical, but it is moderated by sea breezes. यहाँ पे tropical climate है, as well as this portion is, or this island is also very close to equator. That's why it also experiences equatorial climate. तो tropical climate और equatorial climate है यहाँ पर, but समुद्र से घिरा होने के कारण या समुद्र के बीच में होने के कारण जो सी ब्रीजेस हैं उसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट हो जाता है. एंड दिस अंडमान निकोबार is also very rich in flora and fauna, and the Andaman acquired the name Kalapani in the 19th century when the British established a colony and the famous cellular jail in the capital Port Blair. ब्रिटिश पीरियड में यहाँ पर सेलुलर जेल बनाया गया जो आज यहाँ पर म्यूज़ियम की तरह है. और उस समय जो भी लोग अरेस्ट होते थे, जो भी हमारे रेवोल्यूशनरीज़ या जो लीडर्स अरेस्ट होते थे, उन सभी को इसी पोर्ट ब्लेयर में भेजा इस पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में भेजा जाता था. एंड इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो हेयर इज़ volcano is found in barren land. Here is barren island. यहाँ पर ये barren island है जो इंडिया का अकेला active volcano है, which erupted on 10th of April 1991. Now comes to the next island of India, that is Lakshadweep Islands. Now it is located 300 kilometer west of the coast of केरला. ये केरला कोस्ट से 300 किलोमीटर वेस्ट पे सिचुएटेड है. अगर हम देखें
यहाँ पे डिस्टेंस भी सारा मेंशन है, more than 287 सारे ये places हैं, and it's situated in the Arabian Sea. And this Lakshadweep is a group of 36 islands. यहाँ पे total 36 island है. By the accumulation of coral on the tops of the Indian Ocean ridge, which sank below the surface millions of years ago. इस आइलैंड का फॉर्मेशन कोरल की वजह से हुआ है, एंड कोरल आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन कॉलोनीज. कोरल एक बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है विच वी कांट सी with naked eye, and their skeletons form coral deposition in the form of reefs. And there are three kinds of reefs: barrier reefs, fringing reefs, and atoll reefs. And this Lakshadweep, this is formed by atoll reefs, and atolls are a circular or a horseshoe shaped coral reef. Horseshoe shape means horseshoe shaped is a piece of metal shaped like U. जो horseshoe shaped होता है वो एक metal का बना हुआ होता है जिसका शेप U होता है, जिसे हम घोड़े की नाल कहते हैं. उसी शेप का ये एटॉल होता है, एंड लक्षद्वीप इज़ one such a type. And this island were formerly known as Laccadive, Minicoy, and Amidive. But in 1973, it named Lakshadweep, and Kavrati is its capital, and Pilti Island has a bird sanctuary, but it is uninhabited. And Lakshadweep is also one of India's smallest union territory. So in this way, today I am going to finish the second chapter of geography, the physical features of India.